Viewers, the Josh is sky high at the border. Times Now brings you face to face with the Operation Sindoor warriors. These are the BSF braves who gave it back bullet for bullet. Their grit rattled Pakistan. Their spirit echoes duty until death. From trenches to towers, we are reporting live from the front line where valor speaks louder than words. Take a look at this exclusive report. Now is at the line of control. We are bringing you the first visuals for our audience from a forward post. We cannot reveal the location, but we are somewhere along the line of control in Baramulla district of Jammu Kashmir, India. And what you're seeing on your screens beyond these hump is Pakistan occupied Kashmir. This is the Lipa Valley of Pakistan occupied Kashmir, from where, be it Chakoti, be it others, the terror launch pads were placed, and in pinpoint attack from here during Operation Sindoor, it was ensured that the terror launch pads are destroyed, the 2 terror launch pads. Also, where we are standing, what important is that this used to be the line of control till 1971. After a fierce battle in 1971, India ensured that the line of control is pushed back, and that's how further top ranges were taken into India's custody, India's autonomy, and also we will not use the word that India captured it. India reclaimed it from Pakistan in 1971, because Pakistan has been illegally occupying this territory since 1947. What we are given to understand that during Operation Sindoor, about 64 officers and other ranks of Pakistani army were killed after India responded to the ceasefire violations, and over 100 were injured. Many even abandoned their locations and went deep into POK and further into Pakistan as well. Air defense is something that made Operation Sindoor invincible for India. We at Times Now are bringing you these exclusive visuals from a forward post in Nogam sector, where you can see on your screens Zu-23 guns, the air defense guns that can fire about 2,400 rounds in a minute. Under the camouflage is the integrated system that's called Akash Tir, that combines the data from various radars and give command and precision for these guns to hit any flying drone, rocket or missile coming in from the other side of LOC. Very clearly, the Army Air Defense have taken the pie in Operation Sindoor. They have made it clear that India is prepared for the new age warfare. Here in Nogam sector, at a forward base with camera person Himanshu Verma, Risham Pratap for Times Now. Operation Sindoor is now scripted as a history, because we have given a befitting reply and a strong punishment to Pakistan. Currently, we are at the T-72 tank, which was deployed at the front line along the LOC and the international border as well, because we have been seeing that even when India taught lessons to Pakistan during 65, 71 and 99, the enemy did not learn the lesson. And this time, to give it a befitting reply, India deployed T-72, one of its best tank, at the forward post. So this particular tank has 3-member crew. That's the driver, you can see in the visuals. One is the gunner as well, and one is the commander. So these 3 crew members, in fact, are there in this particular T-72 tank, and this was also deployed during the Kargil war as well. But how important it was during Operation Sindoor, let's get a view from the officer of an Indian Army. Sir, how it was helpful? We can see that it also, in fact, you told us that it not only just, was for defense, but to attack as well and to protect the crew as well. So basically, based on this terrain, our main role here is to defend this land. So all our crews, they keep training regularly, and as soon as we got the news on 22nd April, our whatever manpower we already had deployed with them. We had deployed in an aggressive manner so that the enemy couldn't even think of coming from ground and attacking us. So we played a supportive role with infantry, and all our troops were aware what they had to do.
Also, the anti-aircraft gun that you can see behind you was used in engaging all the drones that crossed over from the LC. Drones played a very important role, sir. How it helped, as you mentioned, in engaging the drones and thwarting all the attacks, the attempt to attack, I should say, that the enemy made. So basically, this tank can be used in 3 roles. It can be used in an anti-tank role, anti-personnel role, and an anti-aircraft role. So this gun that my JCO Saab is holding is the anti-aircraft gun that I was talking about. This anti-aircraft gun. This gun can be utilized to target all the enemy cage that you are seeing on top of you. This cage, the net cage, yeah. This is a cope cage. This is used to protect the tank and the crew from any drone that drops any grenades or any ammunition. Basically, it is to provide from loitering ammunition and drones. And these leaves are for the camouflage, so that the enemy could not identify that where are we hiding. So when we hide in dispersal areas, so that the enemy can't identify our tanks or any other equipment, we camouflage them with the natural vegetation that we have. All right. So definitely this time you have given a befitting reply. The Indian Army, Armed Forces, the security forces. So my reply to all our enemy nations that are there, I will reply them in a very friendly manner. That we were ready yesterday. We are more prepared today, and obviously from tomorrow onwards we will give them a more befitting reply. In short, if provoked, we will retaliate. Jai Hind. So that's the, Indian Armed Forces, the Indian Army, the officer of an Indian Army who actually says that we were prepared, we are prepared, and we will forever be prepared. But now Pakistan, if you even try for an attempt of attack here in India, then you, our armed forces, will be giving you a befitting reply. And next time, it could be destroying you. With Vijay Amit, this is Stage 3 4 times now. The Nari Shakti, the women, have also played a very crucial role in Operation Sindoor. They have equally participated as our male soldiers. A soldier is a soldier. There is no discrimination, say it be a male or a female. Currently, I am reporting from one of the bunker, which is also a war room, and it is also very much close to the Pakistani post because it is at an international border. We will introduce you to the women over here, the women officers over here who have been monitoring, keeping an eye on the enemy, monitoring each and every moment over here on the Pakistani post so as to what kind of movement is observed over there, and then they are keeping a strict vigilance on it. These are the 3 Shaktis, I would say, and we'll speak to them so as to how they operated during Operation Sindoor and what was their strategy. Operation Sindoor के वक्त आप किस तरह से यहाँ पर एक्टिव थे? What was your strategy and किस तरह से आप vigilance रख रहे थे and what was your duty then? पहलगांव अटैक के बाद जो हमारे देश की स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी। उस दौरान हम लोगों ने अपने काउंटर पार्ट पे कैमरा सर्विलांस इक्विपमेंट के थ्रू उनकी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया, नोट किया, ताकि जो उनका नेक्स्ट स्टेप हो हम उससे पहले उनको उसका जवाब दे ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो 10 मई की सुबह जब हम तीनों ड्यूटी पर C2 सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे तो हम उनकी हर एक एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे थे। अचानक से 5:25 में पाकिस्तान ने हम पे फायर किया और जो हमारे जवान आगे मोर्चे पे तैनात हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं, उनको जवाब देने के लिए हर सिचुएशन में वो रेडी रहते हैं, तो उन्होंने रिटेलिएशन में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके उन हर मोर्चों को टारगेट किया, बर्बाद किया। इस दौरान हमने सर्च किया उनकी हर एक पाकिस्तान की लोकेशन को जहां से हमारे ऊपर फायर किया जा रहा था। हमने अपने साथियों को कोऑर्डिनेट किया, उन्हें बताया पाकिस्तान की उन लोकेशंस के बारे में, जिससे हमारे जवानों ने उन लोकेशंस को टारगेट करके उन पर फैक्टिव फायर डाल के उनको बर्बाद किया। और साथ ही उनकी जो हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजर कैमराज हैं जो हमारे ऊपर लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसको टारगेट किया, करेक्ट अलाइनमेंट करेक्शन देके उसको हमने बर्बाद किया और बर्बाद करने में हमने उनकी मदद करी अपने जवानों की। किस तरह का सेंटिमेंट था, किस तरह का जोश था, साथ ही साथ कितना गर्व महसूस करते हैं आप? इतने बड़े ऑपरेशन का आप लोग भी हिस्सा थे, आपने भी पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया है वो आज सारा देश देख रहा है। जो उस टाइम हमारे मन में ये था कि हमारी जो
कैजुअलिटी हो वो एकदम ज़ीरो हो और जो रिटेलिएशन हो वो 100% हो, क्योंकि जो पहलगांव अटैक में जो हमारे सिविल्स को जो टारगेट करके उनके धर्म को पूछ के मारा गया, तो उस चीज़ को लेकर जो मन में हमारे जो क्रोध था, प्रतिशोध की भावना थी, वो हमारा जो उस टाइम पे जोश का लेवल था, बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हमें अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि वो दोबारा हमारी तरह और आंख उठाकर भी ना देख सके और दोबारा ऐसे मूव करने से पहले 100 बार सोचे। आप लोग 24 घंटे यहाँ पर तैनात थे, फैमिलीज आपने कहा कि आप यहाँ पर डटे रहेंगे 24 घंटे, और फैमिली को आपने मेरे बच्चे थे साथ में, तो मैंने जैसे हालात चल रहे थे देश के, तो पता ही था कि कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसी कंडीशन तो आएंगी, तो मैंने अपने बच्चों को मतलब एक दिन पहले बच्चों को घर भेज दिया ताकि मैं अच्छे से ड्यूटी कर सकूं, अपनी कंपनी का, अपनी बटालियन का सहयोग कर सकूं, उनको मतलब किसी भी तरीके में ना मेरे बच्चों को कोई दिक्कत आए, एक माँ का फर्ज निभाया मैंने उनको भेज के, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और यहाँ रह के मैंने अपनी ड्यूटी की। सर 24 घंटे आप यहाँ पर तैनात थे जी, 2 से 3 से 4 रातों में जब यहाँ पर स्थितियाँ गंभीर थी। हाँ मैम, जब से ये ऑपरेशन हुआ तब से मैं यही हूँ मैम। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे तमाम महिलाओं को भी जो इस वक्त आपको देख रही हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत बड़ी बात है और महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है। वुमेन्स भी फोर्स का सहयोग कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने सिपाही साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एम्पावरमेंट बहुत बड़ी बात है। वुमेन इज़ द बेस्ट एंड मैन ऑल्सो बेस्ट। और परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, और हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, दैट्स द मोटो, दैट्स द ध्येय वाक्य ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, who is also known as the first line of defense, as they are deployed at the international border of India and Pakistan. During Operation Sindoor, we have seen that how multiple times Pakistan violated the ceasefire, first at the LOC and then at the international border. We also reported from several international borders as Samba, Kathua and other areas as well. But Arispura, from where we are reporting right now, remains to be one of the most sensitive and critical zone. And first time on the television, Times Now is introducing you to the warriors, to the real life heroes of Operation Sindoor. They are the front line warriors, first line of defense of the BSF who were deployed over here during Operation Sindoor. They are the ones who decimated all the posts of Pakistan, who brought down the army infrastructure, the Pakistan's infrastructure over there at the border areas. And here we will be speaking with the DIG BSF of Jammu, Mr. Pal, who will be decoding us the details that how the condition was during Operation Sindoor. This is the way how the frontline warriors of BSF reacts when there is an unprovoked firing from the side of Pakistan. When Pakistan starts artillery shelling, firing, mortar shelling, then this is the way they take their position. These are the BSF Jawans deployed in the Arispura sector. When company commandant gives them instruction, they take the position over here at mortars and starts their job of defeating the enemy. I am being joined by company commandant Jora Singh, who will be briefing us that how the instructions are given and how do they tell the Jawans to take the action and to take their positions as well. Sir, हमें सबसे पहले तो ये बताइए, जब इस तरह की स्थिति होती है तो what is the first action that you take? सबसे पहले हमें अपने जो जितने भी जवान हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, तो उनको पहले ही हमने सुरक्षा हिदायत दे रखी है कि 3 जवान जो मोटर पोजीशन पे हैं उनको छोड़ के सभी अपने मोर्चेज में चले जाएंगे, और जो 2 मोटर्स लगी हैं जो वो मेरे हुक्म से काम करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे ही किसी टारगेट से फायर आता है तो उस टारगेट का हमें पहले से हमने डाटा लिया हुआ होता है, तो वो डाटा मैं इनको पास करता हूँ, वो डाटा अपने इस मोटर पे लगाते हैं, देन फिर फायर के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद मैं इनको जितने भी बम मुझे फायर करवाने होते हैं उतने बम मैं उनसे फायर के आदेश देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर आपने किस तरह से आदेश दिए थे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवान तैनात है, उस वक्त क्या आदेश थे सर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को तकरीबन 9:15 बजे हमारे ऊपर भारी मात्रा में फायर आया था, उनके फ्लैट ट्रैजेक्टरी का और मोटर का भी।
तो जैसे कि हमारे को पहले से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हमें केवल उनकी जो BOPs हैं, जिनकी सीमा चौकियां हैं पाकिस्तान की, उनको टारगेट बनाना है। तो वो हमने पहले अच्छे से रिहर्सल कर चुके थे। तो उसी हिसाब से मेरी जितनी भी मोटर पोजीशन थी, मैंने सभी को आदेश दिया कि जिसका जो टारगेट है उसकी ऊंचाई दिशा लगाकर फायर करें। तो इस दौरान उन पे हमने बहुत हैवी वॉल्यूम में फायर किया, तो उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत धुआं हमने अपने उसमें भी देखा है, और कम से कम 2 या 3 में तो आग भी लग गई थी। तो इसी को देखते हुए फिर उन्होंने पीछे जो रेगुलर आर्मी थी उसकी मोटर्स को बताया कि सर हमारे ऊपर मोटर्स का फायर आ रहा है। तो उन्होंने हमारे को जो एंगेज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मोटर्स ने, बट हमारे पास पहले से भी उसका डाटा था और हम उसको तुरंत भी मोटर पोजीशन देख के निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के बाद मैंने अपने जवानों को इंस्ट्रक्ट किया और उनको डाटा प्रोवाइड किया, तो वहाँ उन्होंने फायर किया। तो हमने चंद ही मिनटों में उनका इतना भारी नुकसान किया कि उनको फायर रोकना पड़ा। What you're seeing on your screens right now is the line of control, the situation at line of control where Indian Army is guarding the line of control. The barbed wires that you're seeing here is the zero line at the line of control along the Tangdhar border of India and Pakistan occupied Kashmir. This is the last point. Operation Sindoor, when it happened, from this position, India fired at about 7 launch pads in various areas of POK. We're not giving the location for security reasons, but this you can see where Times Now has reached. Times Now has reached the zero line of control along POK. From here you will see, be it Nepa Valley, be it Ghikod, be it Nokot, these are the launch pads that were attacked from here during Operation Sindoor.